دیکھیں یہ جو ہمارا سینٹرل واٹر کمیشن ہے وہ اس کو 1911 سے اس کو مانیٹر کر رہا ہے، گلیشیئر لیک آؤٹ فلوز کو. یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جو ہمارے ہائی الٹیٹیوڈ میں گلیشیئرز ہیں ان میں جب مومنٹ ہوتی ہے، جیسے گلیشیئر میں کلائمیٹ چینج سے گلیشیئر گیٹس ریسیڈڈ، then it deposits its material which is there, which it carries, it deposits that at the snout of it and goes back by a few kilometers. This snout keeps on building. This is composed of those stones and rubble and the boulders, those are available to it. And then it starts stopping the melting water of glacier. For some time, the melting water does find place here and there with a breach in this thing. But when it becomes too big and the glacier still keeps on receding and it melts with the heating temperature, more temperature, then this lake becomes quite big. So that is called the glacial lake. And now this glacial lake, when it becomes big, the temporary barrier that the glacier has created of these boulders and all, this gives way. And then this water, suddenly the stored water comes out of it. And whatever is down below, may it be trees, may it be the river system that is Riverine Valley or something, it will erode that. It will bring down, even the trees will be uprooted. Even if there is a village or habitation in its path somewhere, because it will erode the banks, it will wash them down. And then it will cause lot of damage. So this is basically what the glacier lake outburst is. And it usually causes the flood flows, the flash floods, immediate floods in certain parts of the area which it takes place. We have vulnerable sites. If you see, nearest vulnerable site here is our glacier at Thajiwas, glacier at Gagangir. Now over the past years, and Kangan, we have seen Wagat Nala. We have seen these glaciers having formed glacier lake outflows, and then these outflows have traveled down, causing flash floods, breaching the road, and then traffic was stopped. People could not walk here and there until that muck had to be cleared off. And sometimes it also causes washing away of the people on the banks of the lake. That's why when these such lakes outbursts are there, the department warns you that this can happen. So don't go near the water bodies, don't go near the rivers. This can happen. But people still are living there and people go there, and then we have tragedies, as we have recently seen in our cloudburst parts of Kathua and Jammu, Riyasi, Ladakh, Kashmir. Wherever the cloudbursts have taken place, it has taken place all over the state. And it has taken a lot of casualty in terms of human lives, and there are still some missing people which have not been traced. So this is something very sad, very pathetic. One thing is there, that we are doing certain developmental works without any environmental impact analysis, without seeing that what effect it will have on the ecology of the region. And that is one big factor that these damages take place. The second factor is that whatever works we have already taken, because there are certain roads that are being constructed, those have been taken in the fragile zones of ecology, in forest, through forest and all. The ecological impact analysis or our impact assessment of these works has not been done. Government has passed an order that all defense roads which are within 110 kilometer of the ceasefire line, those will not require any pre-assessment of environment from the ecological point of view. And that thing has marred everything, you know. What has happened, that they say that we will see the environmental impact after we construct. Now, after they construct it, what can they do for the negation of those things, remediations of those things that they have caused themselves? See now, they have constructed a road to Amarnath area. Last year I gave an interview, I don't know, some channel. I said that this helicopter sorties that are being carried out, I said that this road that has been constructed and the traffic goes right up to the cave now,
The emissions are there and the fragile system is now getting affected. The temperatures have risen and the shriveling that used to be there, it melted 1 month prior to the period that it would have melted. It happened this year also. On that advice, Government of India stopped all helicopter sorties this year. No helicopter sortie is going to take place there. But traffic goes. The second thing is that the regulation of the number of tourists, number of yatris, they go from Baltal side, they go from Pahalgam side. This regulation also is required. Because if too many people will go in one juncture, then certainly that also will cause this. Because they live there, they have their hearths for cooking things there, there are emissions from their cooking and all that, pollution is there. So these things take place and that has to be controlled. It's all right. They can do it if the yatra takes place for 1 month. They can extend it to 1.5 months if the yatris are more than expected. But the number is to be controlled vis-a-vis the tourism resilience potential of that area, ecologically. That has to be seen. आपको लगता है कि अभी जो किश्तवाड़ में देखा गया कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर लेक आउटफ्लो जो है वो एक बड़ा रीज़न था उस चीज़ का? देखिए, किश्तवाड़ में जो ग्लेशियर लेक आउटफ्लो नहीं हुआ, वहाँ एक क्लाउड बर्स्ट हुआ. देयर इज अ डिफरेंस. क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ग्लेशियर लेक होगी भी, वो भी उसकी जद में आ जाएगी. लेकिन हुआ क्या असल में कि जब ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, इन वैलीज़ के अंदर क्लाउड्स रहते हैं. हमारी ज़मीन पे पोल्यूशन है. जब पोल्यूशन ज़मीन पे ज़्यादा हो जाती है तो वाटर बॉडीज़ के अंदर सन रेज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं. तो ये इन क्लाउड्स के अंदर ज़्यादा हीट हो जाती है. उस हीट से कंडेंसेशन भी इसको हो जाती है, क्योंकि जहाँ गर्मी होगी वहाँ कंडेंसेशन एक नेचुरल फिनोमेना है. लेकिन कंडेंसेशन इतनी क्विक होती है इस ज़्यादा हीट की वजह से कि जो बारिश आपको 10 या 15 दिन में पड़ती, वो 1-2 घंटे में पड़ जाती है. अब इतनी ज़्यादा रेनफॉल इतने छोटे पीरियड में जब पड़ जाएगी, उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट. बादल फटना उसी को कहते हैं. अब उसकी जद में जो भी चीज़ नीचे आएगी, मकान हो, दुकानें हो, लोगों के ये हो, रहाइशगाह हो, या कोई कंस्ट्रक्शन की गई चीज़ें हो, उन सब को आपने साथ बहा के ले जाएगा. जैसे आपने कठुआ में देखा, कठुआ में 60 से ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं. कठुआ में 200 जख्मी हो गए हैं. अभी तक 100 का पता ही नहीं चल रहा. अभी भी लाशें 5वें दिन भी निकाली जा रही हैं. आप वो विजुअल्स देखो, इंसान रोता है वो विजुअल्स देख के, और फिर सोचता है कि भाई हमने ये क्यों नहीं सोचा कि जब हम ये डेवलपमेंट कर रहे थे या हम जो ये पोल्यूशन से करते हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है इसमें, उसको क्यों नहीं हम नेगेट करते कि ये चीज़ होने ही ना दें, हम इस चीज़ को हम रोकें. ये सीरियसली अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा. वरना आप देखोगे कठुआ ही क्यों, लद्दाख में भी आउटबर्स्ट हुआ, बांडीपोरा में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ, यहाँ सारे कंगन साइड में हुआ, आपके इधर साउथ कश्मीर में हुआ. ये तो होते रहेंगे. और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें एक्सेलरेशन होती है. क्लाइमेट चेंज में क्योंकि हीट ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ हीट भी ज़्यादा है, कंडेंसेशन भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगी. तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो फैक्टर्स हमको बताए गए हैं, जो तजवीज़ें हमको बताई गई हैं कि हम एक क्लाइमेट इफ़ेक्ट को इस एरिया में कम करें अपनी वाटर बॉडीज़ के इको रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस करके उसकी एक्वेटिक इकोलॉजी की. ये तो रिसर्च दी है हमको वर्ल्ड बैंक ने और WHO ने. वो चीज़ें हमारे पास तो हैं यहाँ 400, 300, 3000, 4000 ये वेटलैंड्स, उनको अब मेंटेन करें, रिवर्स को मेंटेन करें, अपने लेक्स को मेंटेन करें जो बड़ी बड़ी हैं, डल है, आंचार है, अपना ये वेटलैंड्स हैं, फिर वुलर है. इन सब को अगर हम मेंटेन करें और अच्छी कंडीशन में रखेंगे जो इसकी एक्वेटिक पैरामीटर्स डिमांड करते हैं, तो हम यहाँ कम कर सकते हैं अपनी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को. इतना नुकसान हमको नहीं पहुँचेगा जितना इस वक्त पहुँच रहा है. और अब तो वक्त आ गया है कि हम एक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी भी स्टेट के लिए बनाएं कि जो पानी हमारा बह के आ रहा है, अब इंडस वाटर ट्रीटी भी जो होगी उससे वो ज़्यादा उसका ज़रूरत पड़ गई. नेचुरल वाटर तो आएंगे, वो जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता. लेकिन जो हम अब वाटर यूज़ करते हैं इरिगेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, लेक्स में कितना जमा करना है, इन सब चीज़ों के लिए कितना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना चाहिए, किस सीज़न में कितना चाहिए, हमें अपर स्टोरेजेस तो नहीं कहीं बनानी पड़ेंगी जहां हम पानी को स्टोर कर सकें और जिसकी कमी हो उसको तो उसको रिलीज़ कर सकें. यानी यूनिफॉर्म करें हम फ्लो को रिवर झेलम के अंदर.
اور پھر اس کی یوز جو آگے ہوتی ہے اس کو بھی یونیفارملی ہم کریں ہینڈل تھرو واٹر مینجمنٹ پالیسی فار دا انٹائر اسٹیٹ. سارے کیچمنٹ ایریا کا کیچمنٹ سے لے کے نیچے تک, اور ساتھ ہی کیچمنٹ امپرومنٹ ورکس بھی کریں کہ ہم ایروجن وغیرہ کی جو ٹاپ سوائل کی ہوتی ہے اس کو کم کریں. تو ان چیزوں سے ہم اس ایفیکٹ کو بہت کم کر سکتے ہیں. اور ہماری یہاں جو ہیٹنگ ہو رہی ہے اس وقت اتنی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں کہ جہلم ڈرائی ہو گیا, ہاؤس بورڈ جو ہیں وہ بینکس پہ چلے گئے, مٹی پہ چلے گئے, 72 سال کے 36 سال کے ریکارڈ بریک ہو گئے, فلو کے بھی اور ڈراٹ کے بھی, فلڈس کے بھی. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اسی سے ہم کر سکتے ہیں کہ واٹر مینجمنٹ پالیسی کو اب مرتب کیا جائے. ٹائم آ گیا ہے کہ ان چیزوں پہ ہم سوچیں, گورنمنٹ ان چیزوں پہ سوچے, اور جو ضروری اقدامات ہیں وہ گورنمنٹ بھی اٹھائے اور لوگ ان کے ساتھ تعاون دیں پورا, کیونکہ ہر ایک کے لیے یہ ہے. باقی جو گلوبل کنٹریز نے کرنا ہے, لیٹ اس لیو اٹ ٹو دیم, دے آر وائز ٹو ٹیک ایکشن, کیونکہ وہ خود بھی انوالوڈ ہیں. اگر وہ نہیں اس کو کنٹرول کریں گے تو وہ خود بھی مٹ جائیں گے اس کے اثر سے. تو ہم کو پلانٹ کو سیو کرنے کے لیے گلوبلی پہلے جو اپنی ہماری یہاں چیز ہے اس کو مسجدوں میں ہم اعلان کروائیں, محلوں میں اعلان کروائیں, لوگوں کو سمجھائیں یہ کیا چیز ہے, ان کو سمجھائیں کلائمیٹک چینج کیا ہے, گلوبل وارمنگ کیا ہے, ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں کم کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کریں اور اس کو مینٹین کریں. تھینک یو سر.